प्रवाह के दर्शकों, आज आपका हम पुनः स्वागत करते हैं और एक नई शख्सियत के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे श्री ज्योतिनंदा जी से, जो कि चेन्नई से हैं। हम लोग आध्यात्म की बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन आध्यात्म क्या है ये समझना बहुत कठिन होता है। तो देखिए, वो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, और वो चेन्नई में रहते हैं। लेकिन उसके साथ भी वो हमारे विश्व के लिए, जगत के लिए बहुत अधिक सेवारत है, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये सेवा वो किस प्रकार से कर रहे हैं, तो प्राण शक्ति परंपरा के साथ में जुड़े हुए हैं। तो उनको ये काम करते हुए पिछले 20 वर्ष हो चुके हैं और निरंतर वो लोगों की सेवा करते चले जा रहे हैं। उनके गुरु हैं श्री प्राणा जी। उनसे उनकी मुलाकात सन 2005 में हुई थी सर। 2003 में हुई थी। 2003 में उनसे मुलाकात हुई। और ये जो परंपरा है, जहाँ पर हमें प्राण के बारे में बताते हैं, प्राण क्या है, जो कि एक एनर्जी है। हम लोग सोचते हैं कि ध्यान कर लेंगे, ध्यान करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो जैसे हम लोग सीखते हैं उसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक फिजिकल लेवल पे हम लोग बहुत चीजों को पा भी लेते हैं। लेकिन ये जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि गुरु डायरेक्ट आपके साथ में जुड़े हुए होते हैं, और वो आपको अनुभवों के द्वारा सिखाते हैं। केवल ये नहीं कहते हैं कि आपको उन्होंने इनिशिएट कर दिया और कहा कि आप जाके करें। वहां पर वो आपको ये भी बताते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है वो किस प्रकार से आपके जीवन में सार्थक होगा, और आप उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दूंगी कि अभी मैंने ज्योति रिट्रीट बॉम्बे में उनके साथ में करी, और वहां पर जो मुझे मिला उसका मैं आपको, वो केवल अनुभव से समझा जा सकता है। वो एक ऐसा ज्ञान था। और करके उन्होंने कहा कि आप देखिए, जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं उसे यदि जीवन में हम उतार नहीं पाए तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उनके गुरु, उन्होंने उनको कितना कुछ दिया। श्री प्राणा जी, जिनका हम लोगों में से बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना, ये सिद्धा परंपरा है, हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो आज हमको ज्योतिनंदा जी उसका पूर्ण परिचय देंगे, और आप उनके साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का आनंद लें। तो ज्योतिनंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज इस चैनल पे, और हम कृतार्थ हो गए कि आप हमारे चैनल पर आज आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू लेखा जी। तो मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत उतना स्ट्रांग नहीं 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 है नहीं मेरा नहीं, हिंदी। कोई बात नहीं है, आप दोनों भाषाओं का प्रयोग करें। जी। बस हमारा जो ध्येय है वो कि लोग समझें बस बात को। जी। जी जी। या जैसे आपने कहा, आपका अनुभव जो है ज्योति रिट्रीट में, दैट एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन ज्योति रिट्रीट इज व्हाट प्राणशक्ति इज, वही है प्राणशक्ति। श्री प्राणा जी मेरे जो गुरु है ज्योति सिद्धर श्री प्राणा जी, ज्योति सिद्धर उनका लीनिएज है और श्री प्राणा जी उनका नाम है। ज्योति सिद्धर श्री प्राणा जी का यही एम है कि हर एक हाउस होल्डर, एवरी हाउस होल्डर शुड बी एबल टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। जो भी सिंपल सा नॉर्मल सा व्यक्ति है उसे ये सब कुछ प्राप्त होना चाहिए जो हमारे महामुनि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन एवरीवन अचीव व्हाट सेंट्स हैव बीन अचीविंग, and that also by living as a normal that householder that's the like who most I am. important thing, that's the Yeah. most important thing, that's why मैंने पहले ही आपका परिचय दिया कि आपकी पत्नी और आपके पुत्र हैं, जिसमें Hmm. लोगों को कोई ये ना लगे कि नहीं, जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए हमें किसी हिमालय पे जाके कहीं नदी के किनारे बैठ के साधना करनी है। तो वो चीज जानना बड़ा आवश्यक होता है। जी जी, तो अब द वे यू प्रैक्टिस, आपका साधना जो है आपके टेक गुरु जो टेक्निक दे रहे हैं उससे बहुत रिलेटेड होता है। तो मैं ये सब क्यों कर पा रहा हूँ? हाउ एम आई एबल टू डू? मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट जॉब के साथ अपने परिवार का देखभाल करता हूँ और उसके साथ ही मेरा प्रैक्टिस भी करता हूँ। So after doing my practice also, my taking care of my family also, my doing the job also, I need to find time to do my service projects like teaching or any other thing. And all of the service projects that Pranashakti is doing,
I have been blessed to be a part of that. So how can we do all of that together? ये सब कुछ हम एक साथ कैसे कर सकते हैं? दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं हमें, तो क्या होता है? इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्राणा जी का ज्योति सिद्धर lineage क्या है? What is ज्योति सिद्धर lineage? That is where the answer to everything lies. So Jyoti Siddhar lineage is a new lineage which is started by Sri Pranaji, blessed by Siddharth. So lineage क्या होता है? गुरु परंपरा ये एक history है क्या? Is just a history? No, it's not a history. It's a system. It's a system where gurus are involved, उनका energies involved है, support system involved है, सारे सिद्धर्स इसके पीछे involved है. एक नया सी lineage है इसका it doesn't mean that it's totally new and disconnected. ऐसा नहीं है. It's हम्म supported by the entire Siddha lineage. And when you are guided by a master, you can do many things. Nowadays, it's a internet time, right? Internet technology. And see, we are talking. You are sitting in Delhi and I'm in Chennai. So Abhi, this is an amazing time in this world where everybody is able to talk and connect to each other. And at any moment of time, distance मायने नहीं रखता, लैंग्वेज अभी मायने नहीं रखता. गूगल ट्रांसलेट यूज करके मैं रशियन से बात करता हूँ, आप भी करते होंगे. मैं हमारे हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट, लैंग्वेज भी मायने नहीं रखता. तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है. If technology has taken so much advancement, why can't we use that to learn spirituality, right? So that is that is why technology is enabling us, and that's where Sri Pranaji is utilizing this technology also to take the teachings to the next level through the medium. So technology is not a problem. Communication is not a problem. So But basically, I think understanding and do the practice, that is the most important thing. understanding and do the practice. That is Yes, the most important thing. that is the most important. And people are missing that. Mostly people are now misguided by many gurus. तो वो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक गैप आ गया है बेसिकली, कि लोगों को उसको समझना, उस शक्ति को समझना बहुत जरूरी है. तो आज हम चाहते हैं कि आप इतना सुंदर तरीके से बताइए कि लोग प्राणा जी के साथ कैसे और आपके साथ कैसे जुड़े. ये आचार्य ज्योतिनंदा जी हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है. आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है. उनको आचार्य की उपाधि मिली है और बहुत कठिन तपस्या से मित्रों मिली है. तो आप ये सोचिए कि उनके संपर्क में हम आए हैं और आज हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यस ज्योति. ओके, तो ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ज्योति सिद्धर लीनिएज क्या है. मैं उसके बारे में बता रहा था. ज्योति सिद्धर लीनिएज, ज्योति सिद्धर लीनिएज understands that energy is everything and everything can be done with energy. If okay, people may argue, how can you do everything? Okay, so let me back down a little. 90% of things in the energy and healing and spirituality can be done with energy. So that is where Jyotisiddha lineage is going to take you to the next level. That's where we remove the boundaries, remove the limitations of boundaries by say, because you are able to work with energy. So if this energy-based practices, purely energy-based practices, can give you healing, can give you spiritual advancement, can give mental strength, you name it. We are even coming to a place where even properties of medicine also can be transported using energy through the distances. हम अभी ऐसे एक मुकाम में पहुंचे हैं. हमारा प्राणा जी का रिसर्च ऐसे एक मुकाम में पहुंचा है कि ये भी हो सकता है. तो अभी दवाइयों को ट्रांसफॉर्म करना, आप ये कह रहे हैं कि दवाइयों का जो इफेक्ट है उसको चेंज करने की बात आपने कही अभी, मतलब जी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये है ज्योति सिद्धर लीनिएज. तो जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ज्योति रिट्रीट? You how much did your aura grow? आई थिंक अलॉट. मतलब इतना कि अभी भी जब हम ध्यान करते हैं, जब इस समय बैठते हैं मंत्रों के साथ में कनेक्ट होते हैं प्राणा जी से, तो एकदम आप एनर्जी को फील कर सकते हैं. हाँ, फील कर सकते हैं. और प्रैक्टिस आपके करने के टाइम में जी आपका जब हम ऑरा को फील कर रहे थे, व्हेन वी वर फीलिंग योर ऑरा, हाँ आपका ऑरा कितना मीटर बढ़ा?
बहुत बड़ा, तभी तो बहुत बड़ा एग्जैक्टली थे, बहुत 4-5 मीटर पे दूर चार से, पांच फिर मीटर तो फोर बिल्कुल फाइव मीटर्स प्रिसाइसली, हाँ बिल्कुल इतना तो बढ़ा है, हाँ। बिल्कुल 100%। और हम वी वर डूइंग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इन ज्योति रिट्रीट, वेर यू एबल टू मूव पीपल यूजिंग एनर्जी। या दैट वाज द ब्यूटीफुल थिंग। मतलब ऐसा सोच नहीं सकते कि आप ऐसे खड़े हैं और आपके हाथ में इतनी एनर्जी कि आप किसी को पुश कर सकते हैं। यू कैन मूव पीपल यूजिंग एनर्जी। और अभी देखो आपका एनर्जी और स्पिरिचुअल, यू हैव एक्सपीरियंस इन एनर्जी एंड स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हम देयर वर पीपल लाइक नॉर्मल हाउस होल्डर्स ऑल्सो इन आवर रिट्रीट। हमारे हाँ, रिट्रीट में हम नॉर्मल हाउस होल्डर्स भी थे जो भी पहले दिन ही ये कर सकते थे। तो एक ही दिन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, जो बड़ी तपस्या से लाइक 10 to 15 years ऑफ प्रैक्टिस लगता है ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी में, इतना सब कुछ एक दिन में कैसे होगा। ये कैसे लोग होगा। करके दिखा रहे हैं कि रिट्रीट का आफ्टर द रिट्रीट नोबडी हैज अ डाउट दैट दिस हैज हैपेंड और नॉट, बिकॉज दे प्रैक्टिकली डिड दैट एक्सरसाइज। नो, this is Jyoti Siddha lineage. Spiritual transformation happens very fast in Jyoti Siddha lineage, Pranaji's Jyoti Siddha lineage. एंड ये क्यों होता है, ये ऐसा किया क्यों जाता है? क्योंकि हमें जो भी तपस्या 10 साल या 15 साल पहले लगता था, वो इतना जल्दी हमें अचीव करना है, तभी हम इतने छोटे समय में पूरा हाउस होल्डिंग काम या हमारा प्रोफेशन और फैमिली का टेक केयर करते हुए ये सब कैसे अचीव कर पाएंगे। तो यही ज्योति सिद्धर लीनिएज की स्पेशलिटी है। सो प्राणा जी बहुत ही, वो तो सिद्धा सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिद्धा सिस्टम? सिद्धा सिस्टम इज अ स्पिरिचुअल पर्सन हु हैज अ साइंटिफिक माइंड, हु कीप्स ऑन रिसर्चिंग। ऐसा नहीं कि एनलाइटन हो गए और वर्ल्ड सब कुछ मुट्ठी में आ गया, ऐसा नहीं है। प्राणा जी सेज दैट enlightenment is the first degree in the spiritual university. We have to look at it from a larger sense. And when you look at that, this first degree in spiritual university gives you all of the tools that you need to explore further. Kaya Kalpa, जो लाइफ एक्सटेंड करने का जो टेक्निक है, सिद्धा लोगों ने इसीलिए बनाया था, बिकॉज दे नीड टू एक्सटेंड देयर लाइफ टू डू रिसर्च। अदरवाइज दे कैन सिंपली से तथास्तु एंड एवरीथिंग हैपन। इट्स नॉट लाइक दैट। लोग को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल गुरु हो गए तो हमारा काम आसान हो गया, ऐसा नहीं है। तो that is Siddha system. So that's why Siddhas like Sri Pranaji is create new things, and they invent and reinvent and keep on improvising everything. So that's where, if you look at it, everything in Pranashakti's lineage, you will see impacts that are usually not never seen before. Siddha inner power में जाएंगे तो आपको एक ही दिन में जो पार्टिसिपेंट है उसका स्पिरिचुअल सेल्फ डिफेंस में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। सो प्राणशक्ति में जो भी है प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद ही आप ट्रेनिंग के बाहर जाएंगे। आई विल इंटरप्ट यार, आपको मैं एक और उदाहरण आज देना चाहती हूँ कि जैसे पानी डिस्टेंस हीलिंग की बात हुई थी, आज मैंने 2 दिन भेजा और जिस बच्चे को भेजा वो आज उसने कहा वो पानी मीठा था। तो मैंने कहा ग्रेजुअली तुम एक दिन और उसमें ध्यान से उसको इंटेंशन डालोगे तो वो पानी जो हनी का टेस्ट जैसा आप कहते हैं कि हो जाएगा। तो ये हम लोग स्वयं मित्रों अनुभव कर रहे हैं, ये कोई कल्पनाएं नहीं है कि ऐसा संभव है। और बहुत कुछ रिट्रीट में ऐसा हुआ कि जो देख करके हम दंग रह गए कि ये एक दिन में जो हम अपने को एक नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं कि वो कहाँ से शक्ति हमारे अंदर आई कि हम उसको करने में सक्षम हो सके। तो ये हमारे आचार्य जो बैठे हैं ज्योतिनंदा जी और इनके गुरु जो हम सबके इस समय गुरु श्री प्राणा जी, ये उनके बताए हुए मार्ग पे चलने से ये संभव हो सका था। जी। जी, तो प्राणशक्ति बिलीव्स इन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। बहुत कुछ किताब, रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और रीडिंग अ लॉट ऑफ लेक्चर इज इफेक्टिव आफ्टर यू एक्सपीरियंस, बिकॉज जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको वो डीप एक्सपीरियंस उससे पहले हुआ नहीं है, if you do not have that experience before, you will not be able to relate what is being told in the book. So Pranashakti and Sri Pranaji believes in experience-based learning. You experience first, then you learn. पहले रिट्रीट से पहले मैं अगर आपसे बताता था
बताता कि if I tell you before the retreat that you can push people after the retreat, your aura becomes fire. You will never even believe that. You will think that I am a I am ऑफ a कोर्स, con man, you know. बिल्कुल, दैट इज वेरी ट्रू। कोई नहीं करेगा ज्योति जी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर चीज को जब तक अनुभव नहीं लेते उसको कैसे विश्वास करें। जी ये तो ये जिसका भी साइंटिफिक लॉजिकल माइंड है तो वो तो इस चीज को जरूर करेगा कि ये होना चाहिए, कैसे हवा में बातें कर रहे हैं लोग। दैट्स ट्रू, दैट्स जी ट्रू। So the retreat was amazing, and you were telling something about retreat, but I interrupted you. So I think No, you are. so that's what I was saying. Experience-based learning is what we actually believe in. So अगर आपको experience हो गया तो आपको already पता है कि वो कैसे use करना है, how to use it and how not to use it and all those things, right? Yeah, so that's the same principle in our service projects as तो अब आप गुरु पूर्णिमा का जो आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताएं कि जिससे कि लोग समझे और वो उससे कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं। ये चीज लोगों को जानना बहुत आवश्यक है कि यदि वो आपके साथ जुड़ते हैं। well. जी। I'm a software architect. मेरा काम है सॉल्यूशन सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करना सॉफ्टवेयर सिस्टम में। इतने बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हर दिन हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं और इतना सब कुछ सेंसिटिव डेटा हैंडल करता है, सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है। तो अगर मैं एक गलती if I take a bad decision, everything goes for a toss. Millions of rupees are at stake in my job. I हम्म, go through pressure, है ना? इसी तरह जो भी आप अभी देखो इतना modern world is so busy and fast and competitive, even starting from a child to a professional, even parents who are observing the pressure that the kids are going through, the loneliness that people are going through, the loneliness and depression, amount of depression related problem, everything that is coming in this, happening in this world is so much. And because we are in the spiritual path, a lot of people come to us for seeking help on these problems. And the amount of problem is so much that we do not even have enough hands to handle that. So this is a very, very big problem. Not हम्म, only that, अभी पैंडेमिक हम सोच रहे थे कि पैंडेमिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम्म, इससे बड़ा प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने वाला है। अभी आप स्पिरिचुअल सर्कल्स में यही बातें हो रही है कि अरे ये व्हाट डू वी डू बिकॉज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस the way things are going, political, economical, all these pressures that are going to take the world into, it is going to be real problem. Whatever we were thinking, अभी तक हम जो सोच रहे थे कि ये किसी और के घर में हो रहा है, सभी देखेंगे कि अपने घर में हो रहा है। इतना मेंटल प्रेशर जो अब हमें पता ही नहीं कि हम इतने प्रेशर से गुजर रहे हैं जब हम्म, तक आप ब्लड प्रेशर टेस्ट करके ना देखें। तो हम्म, इतना आ रहा है, तो हर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पॉन्सिबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है और प्राणा शक्ति अपना पार्ट कर रही है। सो प्राणा जी, तो प्राणा जी का ये जो गुरु पूर्णिमा इवेंट में हम यूजुअली क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू? गुरु पूजा, वी रिमेंबर आवर गुरु, बी थैंकफुल। लेकिन प्राणा शक्ति में हर एक बार यही होता है कि गुरु कुछ देता है गुरु पूर्णिमा के टाइम में, गुरु गिव समथिंग। ओह, एंड एवरी गुरु पूर्णिमा, some Guru Purnima we take people to Shiva consciousness. Some people in some Guru Purnima we gave initiations for Om. We focused a lot of COVID related help and all that. So in this Guru Purnima, this is one of the most important Guru Purnima for us because we are taking a very, very, very serious step, and this is probably one of the most serious thing that we are doing to help people heal, help people in emotional, psychological period. So it is not only for people who are emotionally and psychologically disturbed, it is for a commoner because everybody needs some mental strength and clarity. We call it creating mind of a warrior. माइंड ऑफ ए वॉरियर, योद्धा का मन क्रिएट करना है हमें। योद्धा का मन क्यों क्या है? वो कुछ किसी भी सिचुएशन में अपना कंट्रोल खोता नहीं है। दे डोंट है ना, दे विल जस्ट बी एबल टू टैकल एनीथिंग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Creating such a mind is very important for us going forward because everything is going to hit us emotionally. Just lack of time, just one day, if you are 1 hour late,
imagine the amount of stress that you go through when you are driving. It's inevitable, and that's where we need to help people, because amount of problems, 95 or even 99% of the diseases are created because of because of emotional this. problem. It's a non-emotional related disease, just 1%. It's a reality. So that's how things go. So Guru Purnima event will create this opportunity for helping people to heal. Heal means in a spiritual way, right? Help people mentally, emotionally, even for people who are even depression, obsessive compulsive disorder, stress, anxiety. Everyone can participate, and after this there will be a follow-up of 14 days, after which they have to practice, which can help everybody to a very, very, very great extent. So this is one of the service projects like we do every year. आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि जैसे आपने कहा इस समय इनिशिएशन मतलब कि गुरु की तरफ से हमको कुछ गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट जो है तो जो अटेंड करेगा उसी को तो मिलेगा, वो दूसरों की मदद कैसे कर पाएगा? मान लीजिए हमने अटेंड करा, हमको मिला, अब हमको अपने परिवार को देखना है, तो वो हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? व्हाट विल बी द वे फॉर देम? इमोशनल हैंडलिंग इमोशनल प्रॉब्लम हम्म इज नॉट एन इजी थिंग, एंड हम्म अभी हम ट्रेनर्स को क्रिएट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लोगों को हील करना है। ट्रेनर्स को क्रिएट, if you want to become a trainer, that's a long way where you can practice. You cannot, because handling emotional problem is not very easy. And what we are doing is also very spiritually very, very, very advanced thing, because it's and that's why Pranaji himself is directly doing, not Acharya, right? ओके Pranaji himself is directly doing this. So it's what is happening is a spiritually very advanced technique that is being applied here, like bringing people to a new dimension to handle emotional problems. And so people who receive this cannot help others. What they can do is bring more people for this event. If they want to help, it's a totally free of charge. It's a service project. It's a platform for everybody to do service. It is a platform for acharyas also to do service, common people also to do service. Everybody is helping each other. There is no other thing here, right? Anybody can help each other. So it's a platform, and everybody can help by just bringing them to do this event. सो ऐसा नहीं है कि उनकी एनर्जीज एनहांस हो गई तो उनकी एनर्जी से उनके घर वालों को बेनिफिट मिलेगा. वन शुड अटेंड द दिस प्रोग्राम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. That is more important, दैट because इज मोर इम्पोर्टेंट. this is more on a psychological and mental side, where this clarity, and even this is even helpful for people who are doing spiritual practice, and that will enhance their spiritual quality and their energy, because the spiritual practice is mostly blocked. Actually 90% of the blockages in spiritual practice is emotional, psychological, our preconditions, post conditions, all these things. So that is also very, very important for a spiritual person also. I am participating too. नेचुरली. सो वी आर बिहाइंड यू नो. आप खड़े हैं तो आपके पीछे आपकी फौज खड़ी होगी ना, तभी तो मैं तो प्राण जी के पीछे खड़ा हूँ. मैं तो फौज का एक हिस्सा हूँ. नहीं तभी तो फौज बन रही, क्योंकि लीनिएज तो यही हुआ ना कि आपने उनसे सीखा, आपने हमको सिखाया, और हम लोगों को आपके साथ जोड़ते जाए, तो जिससे उनको भी एक सही रास्ता मिले समझने के लिए. क्योंकि आजकल जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई है. लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो किसके पास जाए, क्या करे. आप किसी भी ग्रुप को देखिए तो हर कोई गुरु है वहां पर, और वो गुरु क्या दे रहा है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं. तो उसकी क्लैरिटी आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन, मतलब हाउ शुड पीपल अंडरस्टैंड कि बेसिकली व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ टू वर्क अपॉन दैट? If a guru is saying that I can give this to you, let us imagine, Kijiye, imagine that you have guru, hypothetical situation, right? Let's assume that you have 1,000 people learning from a guru. Right. 1,000 people are learning for 10 years. And one of that person achieves. Is that expertise of a guru or the person? That's the person. Not okay. That's so. Okay, if the guru is teaching, so that means all the students should be equal ना. कि अगर आपने 10 लोगों को पढ़ाए तो 10 उस लेवल पर तो आए कि वो कुछ कर सके. If one is coming out, that means
That is See, that is a huh, student who has learned. in the Jyoti retreat, everybody was able to do move Yeah, people yeah, breathing yeah, energy. yeah, Everybody was yes. able to get that aura. Everybody was able to get to zero, no minded meditation. बिल्कुल So बिल्कुल. everybody is able to. So that means that is Pranaji's teaching, for example, right? So it means that if you should be able to see result. हम Hmm. आपको result मिलना चाहिए. It's not like I will someday achieve, keep doing 10 years, 15 years, 20 years. How long? You have only few minutes, only few years in your hand, right? So Hmm. experience, right? Experience is what is important. Now you can nowadays spirituality has just become a Commercialized. feel good factor. I think it's a commercialized There is commercial, practice. everything will have one part of truth and one part of every, Hmm. if you take anything, Both the sides one of the part of coin. there will be both sides of coin if there is Hmm. a coin, right? So there Hmm. you will see Right, both sides of people in every place, right. but Uh, finally, if you, how do you evaluate, how do you know, if to see whether changes are happening to you? Nowadays spirituality has reduced to, or the other side of the coin, right, bad side of the coin, right. that part, in that side of the coin, spirituality has reduced to the feel good factor created by discourses. Hmm. People sit, listen to what is being spoken about, and they feel good, and they feel good and they are happy, and they go away. Finally, what is being done is normal pranayam. Hmm. You create a fit a new name to the pranayam, Yeah. or no new yoga, and finally what is happening is the same. Now I mean, there was one person who was saying, hey, I have this guru is superb. I was very excited. Wow, there is a new guru now who is really making an impact. And the person was like, what is happening? I was like, what is happening? This guru is excellent because you have to listen. I listen to his speeches. Everything that he says is right. And the person, I was like, if you already know everything that he says is right, what is the use of going to the guru That's and that's that's, spending that's time on very that? very right. Huh. That's the question. Yeah, Why that's the do we question. have? Because it's all a problem with people who are following, because they also, because they do not think, they try to they are afraid of the guru, are afraid of questioning, right? they उन्हें डर लगता है कि गुरु से ये पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं क्यों नहीं हो रहा 5 सालों से, क्यों नहीं हो रहा 10 सालों से, why does it happen for 10 years? So thing is, people have to if I talk about that, it will be more controversial. So people have to experience. When Mm, they experience, they know. When they don't experience, they don't know. So how long will you wait? So everybody has to take their own decision based on their experience. See mm, whether they are progressing spiritually. See whether things are making sense to them. So it's your intelligence, right? Otherwise, there is mm. no standard formula unless you are unless and you are getting a capability to see the guru's aura. How do you know? You need to wait. You can prove only by experience. So this is a very difficult task because when you go and talk to a person, वो कहते हैं नहीं मुझे तो मालूम है मैं तो राम राम का जप कर रहा हूँ या वो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात आती है दे आर जीरो. लेकिन फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम कि नहीं आपका ये जो रास्ता है इससे आप थोड़ा सा डिविएट करिए एंड यू गो टू द राइट प्लेस. As a spirituality, going to a guru is a big risk, taking a risk. But how long will you wait for the risk to manifest, right? Taking a risk, because you don't know until you go and find out. So people have to keep an open mind. People cannot be like stuck with something. There may be more than one guru. Maybe your आपका गुरु भी ट्रू हो सकता है, किसी और का गुरु भी ट्रू हो सकता है. ये पॉलिटिक्स नहीं है. सभी जगह मेरा गुरु ये कह रहा है कि और कुछ हो नहीं सकता. There are different methods, right? So you have to keep an open mind. And when you keep an open mind, that's what science do, right? We are all modern people. Always say that it has to be scientific. And science also is about keeping an open mind. While science में क्या होता है? You have a hypothesis. You try to see whether that hypothesis is correct. And
you try to create a theory, see whether it is working or not, right? So science also, first, how does science invent? They assume that this is happening, mm, going to happen, and they try this and prove it and then create a theory. mm, It's not like you already know, then there is no science, right? mm। It's like, अच्छा, इसमें एक चीज हम और भी देखते हैं कि जैसे शायद जो हमारा सोल लेवल होता है अकॉर्डिंगली वी मीट द गुरुस, दैट इज ऑल्सो, कैन यू से दैट? क्योंकि जैसे मेरी लाइफ में हुआ 1972 से आई एम इन द ध्यान, एक्चुअली ध्यान जिसको कहते हैं, वी यूज टू सिट फॉर दैट। लेकिन वो एक मुझे बाद में समझ में कि दैट वाज कंसंट्रेशन, इट वाज नॉट ध्यान। हमें बाहर से एक लाइट आ रही है, जस्ट इमेजिन दैट। वो करते 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 फिर बहुत सारी मोडालिटी सीखी, बहुत से लोग जीवन में आए, फिर आप आए। तो इस तरीके से मुझे, जैसे मैंने आपसे उस दिन भी प्रश्न किया था, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि हु एम आई, तो वी आर प्रैक्टिसिंग आई एम, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बट व्हेन यू सेड यू कैन एक्सपीरियंस दैट, दैट वाज अ वेरी थ्रिलिंग मोमेंट फॉर माय लाइफ, कि उस समय आप उस चीज को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं। तो दिस हाउ वुड पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैट, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। yeah, a result is हाँ, the main thing. And हाँ, also, people who are experiencing also should share it. It's not like, people are very shy nowadays that, hey, हम्म, and the society is going to make fun of me, hey, everything. So there are many amazing things happening in this world, not only with Pranashakti, there are many serious spiritual organizations हम्म, in the world. They are doing amazing jobs. People are experiencing. So everybody is afraid that how will someone else look at me if I हम्म। talk about this? Is this guy crazy? This guy saying I am able to push somebody using energy in the day one, and I didn't know anything other than watching a film. And next day, this guy went and he's claiming that I am able to move a person using energy. What is he saying, right? So What is- there is a there is a level of shyness also, which is preventing people from talking about it, and because of that the experience stops with the person and हम्म, doesn't spread. And whoever is participating, any spiritual organization, even when you come to Pranashakti, हम्म, you see whether you are experiencing. At least you should say 80% of people are experiencing. हम्म, Assume, अगर मैं मुझे एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ, look at it. Are 50% experiencing, 60% experiencing, or 1% experiencing? That's हम्म, where you know. Okay, agar if 60% or 80% people are experiencing this, and then if you are not able to experience, you ask the person, why am I not able to experience? If this person is able to do this to say 80% of people, that हम्म, means this person knows, and he will, even what he is, the reason he is giving to me is so probably right, हम्म, right? So that is how we have to go. There is no other way for people to judge until you develop an ability to see the person's हम्म। energy. तो मित्रों, यहाँ पर एक बात हम आपको और भी बहुत ही खूबसूरत आपसे शेयर करेंगे कि एक बड़ा एक अच्छा टर्म आया था, गुरु इज अ ड्रग डीलर। वो अच्छी तरह से आपको लत लगा देते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। उन्होंने उस समय तो आपको करा दिया, अब आप अपनी मेहनत करिए, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस स्थिति को नहीं पहुंच सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत कुछ शब्द हमको मिले थे जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब अभी आप ये सोचिए कि आप उसको, पानी को चार्ज करते हैं और पानी मीठा हो जाए, ये कभी आपने सोचा था क्या हो सकता है? लेकिन हुआ है। और ये हमने ही नहीं अनुभव किया, जिसको भेजा उसने भी अनुभव किया, क्योंकि मैंने तो उस पानी को नहीं पिया था। जिन तीन लोगों को अलग अलग समय पे दिया, सबने अनुभव किया। और एक जो नंदा जी, एक चीज और मैं आपसे शेयर करूंगी। कल हम लोग अपने रूम में बैठे हुए थे एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ अ सडन माय हस्बैंड सेड कि यहाँ पर कितनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो तुमने कोई अगरबत्ती जलाई है? मैंने कहा दैट वाज इन अनदर रूम। तुमने परफ्यूम लगाया है? मैंने कहा नहीं लगाया, नो आई डोंट यूज। तो कहाँ से आ रही है? एंड दैट लास्टेड फॉर अराउंड एन आवर। तो मैंने कहा कि यस, the gurus are here, the energy is here, that is why Uh, I can we can that is because of the support system that we have created. You have taken back Pranaji's photo and the associate. So whenever we create a spiritual practice, we also create a support system. So when the person goes back, there are energies to help them. So according to your need, ये सिद्धा system है. This is सिद्धा system. In सिद्धा system, people come without asking and help. And then when that happens, due to the presence of energy,
these experiences happen. But we should not be stuck with the experience. Very Okay, that's true. an experience. It happened. It was Yeah. for that moment. It was It for, happened. Keep it aside. Move on. yeah, that's true. But I just wanted to share with you कि this is Yeah. the first time it happened with us. लोग कहते थे कि बैठो तो ध्यान में बहुत ऐसा ऐसा होता है. तो I never experienced, and this was the first time. Not only me, my husband is not a dhyani, but he could also sense those energy. This is the beauty, friends. तो हमें इसको समझना है, और हम आपके साथ शेयर करेंगे. सर, आप अपने वेबसाइट का इसका क्या है, उसको बताइए लोगों को. pranashakty.org. प्राण शक्ति. pranashakty.org. आप इस पे. जी. PRANASHAKTY. pranashakty. pranashakty.org पे रजिस्टर करिए, और केवल इसको ये ना सोचिए कि इसमें क्या मिलेगा, क्या हमको नहीं मिलेगा, ये सोचिए कितना कुछ प्राप्त करने के लिए है. और घर बैठे केवल ऑनलाइन एक फॉर्म भरना है आपको, और आपको कनेक्ट होना है. एंड फिर आप उसका मजा देखिए कि जिंदगी किस तरह से बदलती है, कितनी खूबसूरत होती है. और जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, इससे हम सब लोग जिसके साथ बंधे हुए हैं, आगे निकलने को छटपटा रहे हैं, वो आप कितनी सरलता से वहां से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो दैट वाज, आई थिंक, वुड यू लाइक टू से सम मोर वर्ड्स अबाउट, और फॉर टुडे. Uh, yeah, this is just one of the service projects that we are doing. In addition to that, Pranashakty बड़ा spiritual organization नहीं है, लेकिन प्राणशक्ति में इंटरनली बहुत कुछ रिसर्च होता है. हम ऑटिज्म चिल्ड्रन के लिए फ्री सर्विस देते हैं. हमारा एनर्जी का अपना एक रिसर्च विंग है, जिसमें बहुत सबसे एडवांस्ड हीलिंग मेथडोलॉजीज यूज किए जाते हैं. सिद्धा इनर पावर है, और वर्मम कले, इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा वर्मा कले, वेर हम सिद्धा सिस्टम का एप्लीकेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल पार्ट एक है और नॉर्मल लाइफ में एनर्जी अप्लाई करना और डिफरेंट चीज़ है. तो उसमें इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल, including practicals, how can we apply energy in practical life. So Pranashakti is a lot of things with under Sri Pranaji, and because of his way of scientifically handling things are happening, and Shakti Enlightenment Program is one such beautiful example. वेरी ट्रू. तो हम लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और अब जो भी नेक्स्ट आपके प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें लोग सरलता से जुड़ सकें. हम, मेरी पर्सनली ये बहुत इच्छा थी कि ये इतना अच्छा सुंदर सिस्टम है, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े. इसीलिए आज मैंने आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, और आशा है कि बहुत से लोग जुड़ेंगे, और आप हमें भी आगे गाइड करते रहें कि कैसे हम जीवन में आगे बढ़ें. तो कोई भी रिट्रीट आती है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सर्विस वाली बात आती है, तो रेडी टू सर्व वाली बात है. आपको retreat, you don't have to wait till retreat. If you go to Pranashakti website, there is a, we call it virtual ashram. It's a virtual ashram है, उसका meditation center में जाइए, आपको directly energy experience मिल सकता है. Retreat तक wait करने की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. You can experience energy through website. तो इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम. लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे, आप इसके लिए तैयार रहिए कि आप नेक्स्ट जो भी आपके पास नई चीज हमारे साथ शेयर करने के लिए, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे. तो सो थैंक यू सो मच ज्योतिनंदा जी. एंड Thank दर्शकों, you for आपका having me. बहुत बहुत आभार कि आपने आज हमको इतने ध्यान से सुना है, और इसी तरह हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे. तो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर ये घर घर तक चीज नहीं पहुंची, तो उसका कोई लाभ नहीं होता है. तो फ्रेंड्स, आपसे ये निवेदन है मेरा कि आप इसको, स्पेशली इस एपिसोड को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और सभी लोग इसमें लाभान्वित हों. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. Thank you so much.